webinar for pharmacists. So if you are looking to migrate to Australia, so what are the steps you need to take in order to migrate to Australia? So I'm going to discuss and then I will talk to you one-on-one. So if you have any questions, you can just unmute yourself and ask the question. Or if you are watching this on YouTube, you can just comment in the chat box. So I will read your comment. I will try to reply. Or you also can type your question in the chat box. So if you are unable to unmute yourself, okay. And I will read your question and I will try to answer. So why Australia and New Zealand to looking to migrate to Australia? Australia, obviously there are so many other countries, right? So Australia, the exam is very easy as compared to US or UK or Canada, okay? And lot of visas Australia government is giving as compared to other countries. They are giving the permanent visa, so you can live and work in Australia permanently with your family, and the salary is very high and lot of jobs are available. So these are the some factors as a pharmacist you consider before you think that where you have to market. That's an academically provide assistance for all healthcare professionals, whether you are a medical doctor, dentist, pharmacist, nurse, and any other profession. But today's just for the pharmacist. Pharmacist basically, the high demand in Australia and very easy PR visa for you and job availability and free healthcare for you if you coming to Australia. If anything happened to you, so you can go to hospital and the treatment is free for you and your family. Okay, and education for your kids also in Australia. High salary up to 5 lakh, 6 lakh, 4 to 6 lakh in between you can earn as a pharmacist in Australia. And standard of living in very high as compared to other countries. So Australia is the best preferred country right now to migrate as a pharmacist. So at Academically, we provide A to Z assistance, including we provide you the 4-month coaching. In that, we will cover the live session classes, plus we'll provide you study materials, plus we will give you a lot of, we will discuss, our lecture will discuss a lot of previous year question papers, how they are in previous years, and then we will also give you a lot of mock tests for the practice tests like real exam. So very easy this journey we make for you. And Academically have very high percentage of passing record, around 92% last time student passed this exam from Academically. Okay. And so this is myself, Dr. Akram Ahmad. So I'm basically Indian pharmacist living and working in Australia. Before that, I was working as a pharmacy lecturer in Malaysia and India. So I have around 10 years of teaching experience in India, Malaysia, and Australia. So I'm basically one of the expert in clinical pharmacy or clinical pharmacology or pharmacy practice subjects. So if you are looking to migrate to Australia as a pharmacist, okay, so whether it is a retail pharmacist or hospital pharmacist, you can migrate to Australia. And for this, there are some steps you need to complete. The number one step, initial skill assessment, or we also can say this is a skill assessment or document verification, or we can say yeah, this is just a document verification. Okay. And once this is done by APC, Australian Pharmacy Council, APC means Australian Pharmacy Council, the whole process done by Australian Pharmacy Council. So you are trying to register yourself as a registered pharmacist in Australia. Okay. So first step, initial skill assessment. Then you need to write KAPS exam. KAPS is nothing but it's a knowledge assessment of pharmaceutical sciences. So whatever you study in a bachelor degree, they just want to check knowledge. Okay. And this is very, very easy exam, 50% passing marks required, and 150 questions they will ask, and there is a 3-hour time for it. It's an online exam you can give in your home country. And once you pass this, then you also need to pass English test. So we will provide you the coaching for English, we'll provide you coaching for CAPS, this classes we will help you done. So all these 3 steps academically will help you to complete. And once you're done, then you can start looking a job. Simultaneously, you can apply your PR visa. This is for same for retail pharmacist or hospital pharmacist. And for Australia, there is no work experience required. Okay, there is no work experience required to start your process. And if you are working in pharmaceutical industry, in that case, need at least 1 year experience. Or if you are a technician, also need 1 year experience.
Apart from this, pharmacy does not require any work experience. Okay, and there is a high chance to get a job. 90% jobs are available in the retail pharmacy or hospital pharmacy. So go for pharmacist process, skill assessment, CAPS exam and English. So most likely you will get the job. तो इंडस्ट्री का इतना स्कोप नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में, लो स्कोप होता है, बट समवन हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस in pharmaceutical industry and they want to migrate as an industrial pharmacist, we can help them to submit their application. So these are the steps you need to complete. And as I mentioned, the initial skills assessment, CAPS exam, then English test like IELTS, OET or PT. These are the three tests regarding you need to complete. And the step one, basically, they want to check your degree or your degree, your transcript, all those things. Sorry, my phone is closed. So whether you did your B Pharm or PharmD, they need your degree and transcript, and you must be a registered pharmacist in your home country. Okay. So these are the document, and then your like passport, birth certificate, national ID like Aadhaar card, latest passport size photographs, all these documents required to submit your initial skill assessment to APC, Australian Pharmacy Council. Okay, and the fees you need to pay. This is the fees you need to pay to the government. 13110 AUD, around 70,000 Indian rupees. You need to pay to the Australian government or Australian Pharmacy Council. So step two, this exams you need to write. This exam fees you need to pay around 2230, around 1,25,000 around you need to pay to sit in this exam. So this is step two process, and 50% marks required to pass this exam. So in this exam, as I mentioned, no negative marking. First of all, no negative marking and 50% pass marks. So all 150 questions you need to basically answer. Even if you don't know the answer, you just guess the answer and give the answer. You just take the answer. And they will ask you mostly the questions from this. So this is basically paper one. There are two paper one and paper two. Paper one, they will ask you the question from pharmacology and pharmaceutical chemistry in the paper one, and paper two they will ask you from pharmaceutics and pharmacotherapy. So pharmacochemistry they will ask you around 30% questions, and pharmacology around 70% question they will ask you. Okay, 70% questions from pharmacology and physiology, and 30% pharmaceutical chemistry, and same for pharmaceutics and pharmacotherapy. Okay, so 50% marks required to pass these exams. So on both exams, you need to write in the same day. Okay, so for example, in the morning, you have to write this paper one, and then paper two after 1 hour gap. And after 2 to 3 weeks, you will receive a outcome of the result, so whether you pass or fail. So they will only mention the successful or unsuccessful, like fail or pass. There's no percentage matter in this exam. So you just need to pass. You just need to be 50% score. Just need to pass. And these are the exam centers available in India: Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, and Chennai. And exams basically conducted in March, July, and November. These are the 3 times yearly they conduct this exam. So you can write whenever you are ready. English required basically like IELTS academic, OET or PT academic. These are the 3 tests you are eligible to write this exam. So IELTS 7 band individual required in IELTS academic, and OET again required B grade or PT 65. PT 65, OET B grade, or IELTS 7 individual band. These are the bands required, and you have to choose IELTS academic, not general one. Okay, IELTS academic, same for PT academic, not general one. So then technician need 1 year experience, as I mentioned. So you can migrate to Australia as a technician, but technician I do not recommend
to anyone to come on technician. So because the salary is very, very low as compared to pharmacist. Pharmacist can earn like 50, $60 up to, after you 2, 3 years work experience, but technician hardly 28, $25 or up to $30 per hour. So these are the some visa options. PR visa, you are eligible to apply once you pass this exam, complete this process, like subclass 190, subclass 491, or these are the work visa also required, and these are training visa. You can also apply. These are the 5 visa basically you are eligible to apply as a pharmacist in Australia. So you can work as an intern pharmacist first time. uh, you have to do 1 year internship. So this is not like India. In India, you are doing internship in free of cost, but in Australia, it is paid for you. They will pay you around $30 per hour salary, around $28 to $30 per hour salary. And once you become a pharmacy, then you can work in community pharmacy. You can work in hospital pharmacy, or you also can become a consultant pharmacist, clinical pharmacist. On an average salary, 80 to 120,000 per year for a pharmacist in Australia, and we can say 3 to 5 lakh per month on an average you can earn in Australia as a pharmacist. And average time will take to complete this whole process 6 months to 1 year. So these are some of the articles recently published in media about in the even yesterday one article published in Outlook as well. If you follow me on YouTube, Instagram, and Facebook, so we just published this news. Earlier, this is about from the News Nation, Farmer Tutor, Hindustan Times. So we have 90 plus percentage uh, passing record in KAPS exam. So easily you can pass this exam in your first attempt. So you just need 3 to 4 hours per day for 90 days. You can clear this exam in your first attempt. So exam is not very tough. It is just a 50% marks required to pass this exam. And you can visit us, and there are some of the reviews from students. And we are providing currently the scholarship. So you can go for this is a free test for you. So if you are looking to migrate Australia, so we are providing, I'm personally providing this scholarship, ASAP, Academically Scholarship Abroad program. So you can give this test, and based on your performance in the test, we will give you the scholarship. Okay. And secondly, if you are from India, Indian citizen, so we also can give you the EMI and loan facilities. So you can pay our fees in 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months, and without paying any interest. So we have our financial partner EduOnce. And thank you. So if you have any questions, so we can talk to you now. Good morning, sir. Good morning. So what is the difference between clinical pharmacist and consultant pharmacist? This is basically, we can say similarly. So once anyone is become a pharmacist in Australia, then you have to become a consultant pharmacist or clinical pharmacist in general. You have to work in a hospital setting, clinical setting, but consultant pharmacists, they can work in communities. For example, anyone have a diabetes and they are a geriatric population. So for them, the doctor, the GP will recommend, please go and review your medication by a consultant pharmacist. So this pharmacist will review your medication based on your condition. He might give some intervention, need to change your dose or change the brand, all those things. So what will be the salary? Will it be similar for the consultant as well as clinical? Salary is very high, maybe up to, they charge basically per patient salary. So around, I think, $70 around per patient they charge. And if you are seeing 10 patients per day, so you can earn $700. So salary is going to be more than double if you are a consultant pharmacist, as compared to normal pharmacist. Thank you, sir. So what would you recommend for the people who are like weak in English? You'll prefer them IELTS or PT or OET, sir? OET and PT. So in OET and PT also, which one would you prefer for the people like whose English are not good? This is not from what I have. This is up to you. Many students saying for them it is there is one girl in last batch. She's saying it's easier for me IELTS. I don't want to go this OET and PT. This is also is up to you, okay, which one you are more comfortable.
But from our previous experience, I highly recommended go for PT or OET. Thank you, sir. Yes, next please. Good morning, sir. Good morning, Abuzar. Sir, what is the total cost to become a pharmacist in Australia? Like APC The fees, as cost you is going discussed. to be around, whatever you are going to earn. You are going to earn here 5 lakh per month. Yes, So sir. cost is total is you are going to involve maybe 6 to 7 lakh only. Okay. All So fees. whatever you are investing in this, you can Yes, yes. basically, make in 2 to 3 months. Okay, sir. In 7 to 8 lakhs, we can migrate to Australia, like academically fees, APC fees, and Everything, KAPS exam everything, fees. everything, even including the visa fees. I'm telling, Okay, 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 sir. even Thank you, sir. English test, everything I'm telling. Okay, okay. This is everything Uh, including. you said 7 to 8 lakhs. Yes, is 4,000 the visa fees. Okay, Okay, 2,000 around exam fees. 1,300 for APC skill assessment fees. Then okay, English sir. fees, academically fees. So altogether it's going to be around 7 lakh max. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Hello, Yes, sir. next, please. Will you help us with the visa processing after the exam, sir? Yes, we have a lawyer here. If you want their service, we can recommend you. So they will help you. But otherwise, I guide to all my students about regarding the job, how to find a job in Australia, CV, their cover letter, and what kind of questions they may ask you in the interview. So I will guide you, and what are the visas you can apply and where to apply, and all those things. I personally guide to all students. Sir, if we do not get 7 in all the four subunits of IELTS, is it possible to get a PR, sir? Yes, visa is it even possible if you are a 6. If you are getting 6 also, you are eligible to apply visa. But you cannot register as a pharmacist. For registration as a pharmacist, you need 7 individual. तो आपको वीजा तो मिल जाएगा, आप you can come to Australia, you can get the visa, but to become a pharmacist, 7 individual is mandatory. Visa can apply even Good if you morning, have sir. even in score 6, even 6. If you have a 6 score, you can apply. So 6 if you have, so you will get a 0 point in the English. If you have 7, you will get 10 point. If you have 8, you will get 20 point. So this is like a point-based system for the visa. But visa you can apply even if you have a 6. Yes, Sir, Kazi. Yes, sir. Sir, is birth certificate compulsory Yes, in sir. initial skill assessment? क्या? Can you please repeat? Sir, is birth certificate is mandatory for sir Birth one certificate, if you don't have, is maybe birth you can certificate show is your mandatory in your initial result at 10th assessment. mark sheet. So if you do not have this birth certificate, you can show in your 10th mark sheet. In India, in our 10th certificate, they mention our date of birth. So you can attach that document. One more question, sir. Yeah. Sir, have you mentioned any specific dates on which dates you are starting academically coaching, or you can start anytime? No. It's going to be, I think, today is the 9th. Oh, Yes, yeah, I sir. think yesterday only is it just started. I Yeah, think. I have talked to Khushbu ma'am about this. Yes. So it is just one lecture only is done. So we just started. Yeah. Okay, sir. Okay. You And can one join. more question, sir. Do we need any block amount? You have to talk to the that Khushbu only regarding Oh, this. okay. Okay, sir. Apart from fees, you can talk to me any other doubt. You can talk to our team. Okay, sir. Yes, yes, Sir, excuse me, sir. Sir, for the March batch, the classes had started yes, yesterday. yes. Yesterday only, I think it started. Thank you, sir. So please join as soon as possible because we need 4 months. Because last month we do a lot of revision. Okay, so right, this is the right time to join for if you want to write this exam in March. Sir, one more question. Sir, like I have applied for like study visa to the United States of America and I got rejected. So would that have any impact on No, my no. future? No. Even if you applied for Australia for a student visa, and if they reject it, doesn't Yes. matter because you are applying now PR visa, permanent visa, Yes, sir. based on your skills.
So Yes, this sir. is totally different from the student visa. A student visa might be rejected due to your financial condition, for example. Yes, sir. So there is so many other reasons to reject for student visa. But in Australia, you are applying for a skilled visa. For skilled visa, uh, uh, I mean, there is no impact. Sir, I'm a 2018 pass out, so if I don't have any work experience, it will also not have any impact if I clear gaps. No, you have to show why it is 5 year gap. Okay, sir. But there is no work experience required. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, could you please suggest some institute to clear the English test like IELTS, OET, and PT? नहीं यार कौन सा इंस्टीट्यूट में रिकमेंड करें कहता है एकेडमिकली इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन Sir, academically also provide. एकेडमिकली कराई इंग्लिश What, भी sir? पास कराएगी कैप्स भी पास कराएगी स्किल असेसमेंट भी करवाएगी सारी चीज हम ही कराते हैं तो इफ यू वांट join only Thank English you so much, then. sir. So we will do No, sir, I end-to-end want to join both. yeah so both basically हमें Sir, skill want to assessment both. कैप्स इंग्लिश वो सारा हम ही कराएंगे नो नीड टू वरी Thank you, sir. okay yes next please Yes, sir. Thanks a lot, sir. yes Utpal Das. This is what I already told the process. So if you are migrating to Australia, you have to apply first for skill assessment to APC, Australian Pharmacy Council. This is the first step. Next step, you need to write this KAPS exam. In your home country, you can write. So in Bangladesh, there is no exam center. So you need to come to India. For you is no problem getting a visa for India. So you can write this exam in India. And then you also need to pass English test. We are the Hello, sir. Okay. Suraj. Sir, what is the process for applying a visa for Nepalese student? Whether it is Nepalese or Indian or Pakistan, doesn't matter nationality. It's the same process for everyone. Nothing is special for any nationality. You know, they are treating in the same way for everyone. So as I mentioned, these are the steps you need to complete, and you have to apply EOI and visa. There are so many Okay, sir. Nepalese students already join us. Many of them already passed. They are in Sydney. There is one student Rajendra. He was our first student. Now he is working as an intern pharmacist in Melbourne. You can watch his video. I think 2 videos are available in my YouTube channel. Excuse me, sir. I have a question. Yes. I am from Bangladesh, Okay. and I have already about 15 years of experience, and I already applied for 492 visa Australia, and my equivalency was okay. Now regarding the, I'm a pharmacist, and now regarding the, as you have mentioned that I need to go to Have you India for passed the CAPS exam? exam. Have you Sorry? passed the exam? For CAPS? Yes. No, I didn't. I didn't Then how you sit can for it. apply for a 2 visa? I just applied for 492. I am not clear about that. Actually, I want to know. I joined lately, so can you please haven't applied. explain You me? cannot apply. Pharmacist No. cannot apply any visa without exam. How you can apply Okay. without writing the exam? I just applied for 492. Like, 492. I know 482 you are talking. This is work visa. Yeah. Or 491. 492 maybe. 491 or 92. Yeah. 491 is a skilled visa. Still, you need to pass this exam. You cannot apply the directly visa. And visa directly apply नहीं होता Australia में. First, you need to apply EOI. And once you got invitation, then you have to apply with it. I think you give some money to any agent. Have you talked to the agent? Yeah, it's through the Your, agent. your agent basically misguiding you. He just took your money from you. And this is any pharmacist basically to migrate Australia. You cannot migrate. You cannot basically file any visa because you are not a pharmacist. You Yes. only can be a pharmacist once you register in Australia, Australian Pharmacy Council. I'm an Indian pharmacist. How I can say I can register in Bangladesh? So in other country or Saudi Arabia or UAE, any country,
If you want to practice in any other country, you need to write the exam, pass the exam, then only you can register there. Then after that, once you register, then you can ask the government, give me the visa. I'm registered pharmacist in your home country. Okay. Without this, they cannot, because so many agents basically, they misguide the student, they took the money, so I know it sometime. So don't give money to any agent, such agent basically. You cannot migrate to Australia with the whether it is Australia or any other countries. कहीं का भी होगा आपको exam is mandatory to pass to become a pharmacist. Or if Okay. you are in industrial pharmacist, in that case, still you need to English test. Yeah, I already have an English test like IELTS 7. But fact is that I didn't aware about KAPS test. But what is the advantages? Can you please tell me about in detail, in a summary, like about the KAPS? If I You can pass, basically go to our website and there is 100+ blogs is there. You can read those. Uh, okay, so anyone want to get guaranteed job in Australia, secure your future, you must write the exam, get a job. As I mentioned in my presentation, 90% jobs are available in retail pharmacy or hospital pharmacies only in okay. Australia. So if you pass the exam, you will get the job. Otherwise, very difficult to find a job in the industry or any other field. Once I will pass, but regarding the visa issue, I mean the migration issue, is it it will help me or like Yes, yes, uh, it will help. it will help? That's always help. It is only applicable for Australia, I guess. Yes. Each country have their own exams. This is CAPS for Australia. KAPS for Australia. Okay, thank you. Yes, next please. Sir, is transcript for only for the pharmd student or B pharma student? Whatever, जो भी तुमने किया है उसी का चाहिए. If you are a B form, then they will ask from B form. If you are a pharmd holder, they will ask you transcript. But so whatever you study, basically, whatever the course, they will ask the transcript for that. Or if you did both, B form plus What is pharmd, then you can just show the B form. Pharmd is no advantage basically to show both degrees. sir? Most of the time, the university provide the only migration certificate, not transcript. So you can request them. You can request your university, they will give you. You have to Thank request you, to your sir. university, they will issue the transcript or consolidated mark sheet. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, yes. And contact our team. Basically, they will help you. I think they already give you this link on WhatsApp. So if you have any questions or something, you can just ping them. Or those are new, they joined from our other social media handles. You saw the real link. So please provide us your phone number, email in our chat box. So we will connect to you individually. Please provide your name, phone number, and email in the chat box so we can connect to you individually. Or time to time we also receive a lot of information. Or is there any opportunities for you? So we will contact you on your WhatsApp or email. Okay, so please provide in your detail in the chat box. Yes, next question, please. Sir, can you please repeat what's the further process after clearing the CAPS exam? Nothing. I mean, you just need to apply the PR visa. You just file EOI, expression of interest, and once you invited got, then file your visa. That's it. And you can start also looking the jobs in Australia once you pass the CAPS. So once you pass the CAPS, they will give you a letter. Based on that letter, you have to apply the EOI or visa and also start looking a job in Australia. So this is the two things. So if you got job first, the employer will give you the work visa and you can migrate to Australia on work visa, or you got your PR visa and come to Australia and find a job. So both possibilities is there. Many students got job from home country itself. Okay, sir. Please provide your phone number, email in our chat box. So time to time we will share you information, not just about the Australia, some other country if we have any opportunity.
Okay. So please provide us your name, phone number, especially the WhatsApp number, and plus your email ID. Yes, Suraj, you want to say something? Sumit, Shrestha, So, can we apply for KAPS exam after going dependent on Australia? what? Can we apply for Your KAPS voice is not exam? clear. Your voice is not clear. आप repeat करो या फिर आप अपना type कर दो question. Hello, sir. Can we apply for KAPS exam after going dependent on Australia? Yes, yes, can. So if you are in Australia or any visa, student visa or dependent visa, you can apply. What is the criteria? Same criteria, nothing special criteria. Same. They just want to check your degree. If you are a B Form holder or pharmd, you did, and you must be a registered pharmacist in your home country. So this is the criteria only. Degree plus must be a registered pharmacist in your home country. So this is the criteria to apply to start your process What are the basically. documents to show the Australian embassy? Degree, transcript, registration, and all those documents required. Good morning, sir. Good morning. Hello. Yes, Pooja. Sir, just I have completed my final year theory exams. Is I am able to eligible for KAPS exam? Now you can start Hello. coaching now, but you will only eligible once you get registered pharmacist in home country. So registration is mandatory in state pharmacy council. Okay, thank you. Thank you. But you can start Hello, good morning. your coaching with us. So once you got your registration, then we will file your. I mean, we can start your skill assessment process. Hello, good morning, sir. Good morning, Praveen. Yes, sir. Sir, I want to know what are the criteria for the university lecture? Do you think that a Nepali or Indian or Pakistani lecturer can teach in Australian university? I mean, this is like even those are completing PhD. Yesterday, I post one post regarding one with me. So I did my PhD from University of Sydney. This is number one university in Australia and worldwide is a 13 rank. And we did PhD. 116 students did PhD in same year. So every year, 100 students passing from Australia, PhD. So for them, difficult to get a job. They are also writing the KAPS exam to get a job in Australia. So there is I can say, no jobs or very, very low chance, maybe 1% I can say. So don't go in that. If you want to become pharmacist in Australia, you can start process. I know two of my own friends, they did PhD. They was a associate professor in Dehradun, India. Okay. They passed the KAPS exam. Now both are husband and wife working in retail pharmacy. Now they are happily they are living here. Okay, thank you, sir. Thank you. So getting a job in academics is like very really tough. The reason is here very low number of college. Only 9 pharmacy college they offering pharmacy education here in Australia. That's why they need pharmacists. Even if they increase 30, 40 colleges or 50 colleges, then no need any pharmacists from abroad. Why they have to hire from other country? So they can produce enough pharmacists. The number of pharmacy colleges are very low in Australia. That's why they need pharmacists from abroad, from other countries. That's why this is the opportunity for you. If they increase, then no jobs for pharmacists in Australia. Hello, sir. Sir, if we clear KAPS exam while doing masters in Australia, is it possible to do the internship as a Yes, part-time? we have I think 300, 400 students like this. They are come to Australia to do Master of Public Health, Master of Healthcare Management, or XYZ course, and simultaneously they pass this KAPS exam. So you are come to Australia any course, but to get a job or PR visa, you need to pass that. So if you are coming Australia study visa, I highly recommend to start preparation now. In your first semester, you can pass the exam and can file your PR visa. And once you got PR visa, you may do your study part time or you may discontinue. It's up to you. Otherwise,
you have to pay the very heavy fees for your studies, whether whatever in master degree you are which course you are coming to Australia. Public health, sir. Public health, MPH. So MPH not in the PR list. So anyone is coming for public health, the fee is around 30 lakh Indian rupees. And there is no PR or no jobs. So getting a job in PR visa, you need to pass this CAPS exam, whether you are in India or Australia. Okay, science. So basically you can come on that visa, but please pass this CAPS exam as soon as possible. Thank you, sir. Sir, if we want to give CAPS in November 2024, what batch of Academically we have to join? We actually we run three batches for each course. So you can contact at that time to us. Thank you, sir. Thank you. We run 3 batches for each course. For example, March. So we are running 3 batches for this. 2 batches are already done. One third batch is going to start soon. Next, please. Please leave your information, phone number, email in our chat box so we can connect to you later on if there is any update for you as a pharmacist if you are looking to migrate abroad. Okay, so please provide us your information in our chat box so we can connect to you later on. Yes, Dr. Samiullah, do you have any question? Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum salam. I'm good. Yes, please. जी बताइए. I'm a registered pharmacist at KSA. So Okay. how can I go for this exam from Saudi Arabia? Saudi Arabia have 3 Is it centers. possible? Right. In Jeddah, there is a center. Okay. There is, Can the process be done in India? yes, in India The also you can. assignment? Yes. So there is so many centers in exam and Saudi Arabia also. So wherever you want, you can write the exam. You can start your process. We will help you to Okay. complete your A to Z process. You just need to connect with our team. Okay. And how long does it take to complete the assessment process? Nowadays, it's taking hardly 2 weeks. 2 weeks? Yes. Earlier it was 2 to 3 months. Now very fast nowadays. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Please provide us your information in our chat box so we can connect to you later on. We can give you some more information. And we have a scholarship is ongoing. So please give this scholarship, this CAPS scholarship. So at least you know कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है? तो at least free में scholarship तो का test देके देखो, ठीक है? हमारी टीम से connect करो, उनसे बात करो. Based on your score, they will give you the basically the discount on this scholarship. Basically, they will offer you. So you can connect our team for more information. To you. Yes, but please unmute one by one. Anything you can ask me about Australia. I am here to guide you guys. When I was a student, there is no one, so there's this guide for me. तो मैं तो यहाँ तक आ गया, मेरे को यहाँ 10 साल लग गए यहाँ आते आते ऑस्ट्रेलिया. अगर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप 6 महीने में यहाँ आ सकते हो, राइट? तो आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज many agents are in India, they are not giving the correct information. They will say always to you, please go for a study visa and like public health or all those kind of courses. And those courses are very, very expensive. You have to pay around 30 lakh rupees, and still you are not able to get a job and visa in Australia. Yes, Avinash? Sir, will there be opportunity for a pharmacist to migrate to Australia even after 4-5 years? My brother is planning to study. I mean, 5 साल के बाद में क्या होगा मुझे तो खुद को नहीं पता कि किसकी गवर्नमेंट आएगी, किसका क्या होगा, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट 5 साल के बाद में क्या होगा. बट राइट नाउ एनीवन इज कैन माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया इज द राइट टाइम. तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वीजा के जो रूल्स होते हैं वो चेंज करती रहती है हर एक कंट्री, ठीक है? तो 5 साल के बाद में क्या होगा आई कांट कमेंट. बेसिकली अगर आपने मेरे कहने पे एडमिशन ले लिया और कल को तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, सर आपने तो कहा था आप ले लो एडमिशन और आपको जॉब मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, है ना? तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप 5 साल के बाद में क्या होगा. आई कांट कमेंट ऑन दिस. अभी 2 साल के वीजा मिल रही है, डेफिनेटली मिलेगी.
दिस इज माई प्रोडिक्शन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years मैक्सिमम। आफ्टर दैट क्या होगा मुझे भी नहीं पता है अभी। यस भाग गया। प्लीज अनम्यूट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर मैं मुख्तार अहमद मुजफ्फरपुर से बात कर रहा हूँ। जी सर ये कैप्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ मुझे बताएंगे, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैसे क्लास होंगी, कैसे क्या करना पड़ेगा तो सर? हम लोग कहते हैं ऑनलाइन, तो आपके मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप क्लास को अटेंड करेंगे। तो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। जी एंड वी प्रोवाइड स्टडी मटेरियल और बहुत सारे जो मॉक टेस्ट, तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन बेसिकली। तो भी अब हमारे एक मोबाइल का एप्लीकेशन है, हमारा LMS बना हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर हम लोग जी। क्लास लेते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू इन दैट सिस्टम। तो सर वी हैव टू पे और फ्री ऑफ कॉस्ट योर प्रोवाइडर्स? Yes, it is a cost. Why we have to provide, Australia में एक company, as I mentioned you are going to earn up to 5 lakh per month in Australia. Yeah. So why? When there is a lecturer in Australia, they are going to teach you. There is a 10 lecturer for CAPS. Nothing is free. So you have to invest. So how much you have to pay, sir? It is not just to our fees how much you need to pay. You need to pay government fees also. You need to pay government fees for exam, government fees for CAPS exam, government fees for assessment, government fees for English test, then visa fees. All together, you have to pay around 7 lakh rupees. Mm-hmm. Okay, sir. Okay. Yes, Gaurav. Sir, I need to ask you that there is a lot of gap of my passing year and the experience year. It is almost 13 years gap. So, how I can cope up according to the examination and syllabus? Many students, if you watch my videos, so there is one guy, his name is Deepak. Okay. एग्जाम है 18 ईयर स्टडी गैप, 18 साल के बाद में उसने पास किया ये एग्जाम। ऐसे ही एक जो मैथ्यू, उसको भी 17 ईयर का स्टडी गैप था। एक बंदी थी, उसका क्या नाम था, वो थी साउथ अफ्रीका की एक लड़की थी, पेट्रो, उसका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसको तो 25 साल का गैप था, वो तो 50 ईयर प्लस की थी, उसने भी एग्जाम पास किया था। तो पासिंग द एग्जाम इज नॉट very tough. You are not going to write something. This is not a IAS exam or something exam के भाई 1 लाख लोग लिखेंगे, एक ही बच्चा पास करेगा। ये IIT का एग्जाम नहीं है। It's just जो आपने पढ़ा है फार्मेसी में, उसमें से 50% ही आपसे सही करना है आपको। बहुत ही इजी एग्जाम है। इंडिया में अगर हम फार्मेसी करते हैं किसी भी स्कूल में, तो पासिंग मार्क्स 50% ही होता है, राइट? राइट। और वहां पर क्या होता है, जब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 10 मार्क का या 8 मार्क का, वहां कभी भी लेक्चर पूरे मार्क नहीं देता है। 8 मार्क में देगा वो 5 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, राइट? मगर यहाँ क्या है, यहाँ है पूरा MCQ, मल्टीपल चॉइस है। ओके। हाँ, उसमें से आपको 50% अगर आपने सही कर दिया, आप पास हो जाएंगे। ओके। एंड 50% पे हमको एलिजिबल हो जाएंगे कि हम वर्क वीजा मिले ऑल दैट जॉब्स एंड ऑल। So basically, once you pass this exam, whether it is 90% आपने स्कोर किया या 80% किया या 50% किया, उसको कोई मैटर नहीं करता। उनको सिर्फ चाहिए जब आपने एग्जाम पास करनी है। तो उनकी जो क्राइटेरिया है कि भाई, जो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि यहाँ पर क्वालिटी के लोग चाहिए, बिकॉज यहाँ तो गोरे लोग हैं, राइट? तो इनकी जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, इसीलिए उन्होंने एक टेस्ट कर दिया कि भाई जिसका ही 50% आ गया वो हमारे स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है, उसके बाद फिर वो अपना वीजा लेके यहाँ आ सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। Okay, and I have done bachelor's of pharmacy. So, in which field I will get the job over there? Pharmacist की जॉब कहाँ होती है, मतलब इन जनरल? No, there are lots of different clinical pharmacist is there, then data analysis. मतलब होता है रिटेल फार्मेसी में या हॉस्पिटल में काम करना। Okay. इंडिया में क्लिनिकल फार्मेसिस्ट को 12,000 रुपए मिलते हैं अपोलो के अंदर, तो ऐसे नाम से क्या फायदा है? राइट। यहाँ मिल रहे 5 लाख रुपए, रिटेल में काम करो या हॉस्पिटल में काम करो आप। तो यहाँ में टाइटल डजंट मैटर। बेसिकली जहाँ भी मेडिकेशन डिस्पेंस होगी वहाँ फार्मासिस्ट का रोल होगा। अब इंडिया में तो क्या है, कोई क्लिनिकल रिसर्च में जा रहा है, फार्माकोविजिलेंस में जा रहा है, कोई कहीं भी जाकर काम कर रहा है वहाँ पर, कोई वहाँ जॉब्स नहीं है, कोई MR की जॉब कर रहा है, राइट? राइट। तो वहाँ पर मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, कितनी भी जॉब करें, बिकॉज वहाँ का जॉब का
अलग ही सिनेरियो है वहां पर। एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मेन क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर डिमांड हाई होगी और सप्लाई कम होगी, तो वहाँ सैलरी हाई रहेगी, वहां पे इज्जत रहेगी आपकी। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि 6,000 करीब फार्मेसी कॉलेज है इंडिया में राइट नाउ, 6,000 प्लस फार्मेसी कॉलेज, लाखों में पैसा निकलते हैं, वहाँ सप्लाई मतलब वहाँ डिमांड ही नहीं है, यहाँ पर ना तो वैल्यू है ना ही पैसा मिलता है, ये एक प्रॉब्लम है Okay, इंडिया में। and second thing, I have experience of 10 years in manufacturing pharma industry. So without CAPS exam directly, I cannot get the job over there. You can apply as an industrial pharmacist visa, you Right. can get, okay. I can apply. They mentioned that 90% जो jobs होती हैं वो होती है रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो Okay. जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर मिल जाती है, ऐसा वो भी नहीं है कि नहीं मिलती है। मगर अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, देन देयर इज अ मोर चांस टू गेट अ जॉब, एंड आप वो एग्जाम यहाँ के भी लिख सकते हो। तो आप पहले आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट पे आ जाओ, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का। Right. So can you guide me please for that, for industrial pharmacist application? हाँ, सेम फर्स्ट असेसमेंट होता है, इंग्लिश का टेस्ट होगा, वो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। आप अपना Okay. फोन नंबर, ईमेल हमारे चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaste, sir. नमस्ते। यस नीलेश, निशांत। After I becoming pharmacist in Australia, can I open my own pharmacy there? Yes, you can do anything you want. If you want to ride taxi, you can. So once you got your visa, you are free to do. You want to do business, you want to work, whatever you want, you can do. कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही करना है। आपको वीजा मिल गया, आपको जो करना है कीजिए। फार्मेसी को, आप फार्मेसी खोलना यहाँ पे इजी काम तो है नहीं। यू नीड $1 million, मीन्स 5 करोड़ रुपए चाहिए ऑफ इंडियन रुपीज में। फार्मेसी खोलना है बच्चों का खेल थोड़ी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। इफ यू हैव मनी, यू कैन। Just to know about that. Yes, yes. I mean, anyone, any business, even if you want to own pharmacy or a pharma company, you can. You need money. That's all. Okay, sir, and I am from Nepal, and I can join your academically, right? Yes, there is so many And- Nepali students already join us. My first student was Lakshmi, and she passed this exam. You know, I remember. There are so many Nepali students passed with us, and they are working in Australia. And if I have to send you my hard copy certificate, how No, can I send you? no need to hard copy. We need only Soft scan copy? copy, soft Okay. copy. Hard copy does not need for us. For us, फार्मेसी काउंसिल या कुछ भी, आजकल एवरीथिंग यार ऑनलाइन चल रही है, अब हार्ड कॉपी का जमाना नहीं रहा। Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Yes, Sandeep. Good morning, sir. Morning. I am from Nepal, sir. So, is there any procedure for assistant pharmacist without CAPS exam in Australia? No, 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 no. कोई पोस्ट नहीं होती, अपने वहीं पे रहो, मौज करो नेपाल में रह के। If you want you need to write an exam. If you are not writing an exam, so you are not a pharmacist, you are not qualified. For qualified, you need to pass the exam to get a visa. Then only you can ask the government, give me visa, I am a pharmacist, I passed this exam. Without writing exam, there is no visa. There are some agencies, they claim that without visa you can apply to We are not agency. This is the main difference. There are so many agents, even they called me, they asked me, sir, this is the problem, how we solve this. We are not agency, we are an education company. And I am a pharmacist, PhD holder. Okay. So we are not agent, we are not here to anyone to misguide you. We don't want such things. So कहीं पर भी, even if I want to work in Nepal as Indian, I cannot work in Nepal. I need to register first in Nepal as a pharmacist, then only I can work in Nepal, right? So how you can work in Australia? Australia is a high income country. तो आप सिंपल से समझो, registration is mandatory to work in any country. Okay, sir. Okay, thank you for your information. Thank you. Basically, in any country, you want to work, registration is mandatory. In simple words. Yes, Karan? Sir, actually, I have a question. But we can get any, any benefit if we apply for skill assessment from Australia?
Basically, if you want to migrate to Australia, then you need to apply skill assessment. If you do not want to migrate, then no need to apply. This is the No, first no. step. So these are the Sir, steps you need to complete. sir, but I will get any benefit if I applied for skill assessment from Australia, not in India. No. There is no advantage or disadvantage. So, if, Okay. for example, if someone is coming on a study visa in Australia and he or she is applying here in Australia, so there's no advantage. The same. They basically consider your passport. Are you from which country and your education from which country? That's it. Okay. Doesn't matter you are in Australia or in India, but आपका पासपोर्ट तो इंडियन ही रहेगा ना, आपका डिग्री भी Yes. इंडिया की रहेगा, तो कोई एडवांटेज नहीं रहेगा. Okay. So, sir, what is the time duration of clearing the skill assessment? इसका असेसमेंट तो 2 वीक में हो जा रहा है आजकल, बहुत ही फास्ट हो रहा है. इट टेक अराउंड 2 वीक टू कंप्लीट. Okay. And sir, the CAPS paper pattern is same in Australia and India, or is there any फिर difference? दुनिया में कहीं भी जाओगे सेम ही होगा. तो मैं बताऊँ होता क्या एग्जाम में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए प्रोफेसर, जैसे एज यू नो आई एम प्रोफेसर, तो जैसे कंप्यूटर के बैक एंड में हमने 10,000 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है, एमसीक्यू बेस. अब क्या करेगा, आप लिख रहे हैं इस एग्जाम को हैदराबाद में, एक दूसरा बंदा लिख रहा है इसको मुंबई में, एक बंदा लिख रहा है इसको यूके में, एक लिख रहा है इसको सऊदी अरेबिया में. तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उस 10,000 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन कोई भी पिक करेगा, वो आपको दे देगा. दैट्स इट. Okay. वो एग्जाम पूरी दुनिया में आप कहीं भी दोगे, वो सेम पैटर्न पर रहेगा, सेम ही रहेगा वो. So, sir, all the questions were same at the same day of the examination. No. It may change. हर बंदे को क्वेश्चन पेपर अलग आएगा, मगर वो आएंगे उसी में. बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. मैंने बताया ना कि वो बैक एंड में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, उसी में से Yes, sir. कंप्यूटर कोई भी 100 पिक करेगा, दे देगा आपको. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Sir, यस गौरव. what about the Canada? कनाडा में तो भाई वीजा ही नहीं मिल रहा है. बेसिकली वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर पीवीसी आल्सो, पर वहाँ तो बहुत ही टफ प्रोसेस है. एग्जाम बच्चे पास ही नहीं कर पाते. जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, दीपक का. दीपक इज ए इंडियन गाय, ही इज ए सिटीजन ऑफ कनाडा. Okay. मगर 11 साल से वहां पर बेचारा वो कर रहा है, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर, वो 11 साल से. Okay. ना उसको फार्मासिस्ट बनना है तो उसको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ता है. अगर आपको अपनी फील्ड में काम करना है तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट प्लेस. एंड आपने डिग्री किया है, उसका यूटिलाइज करो, यूज करो, अपनी फील्ड में ही काम करो. आपको मजा आएगा कि आप इससे अपने जो आपने डिग्री किया आप उसी में काम करो. अदरवाइज आप कोई दूसरा काम करो, टैक्सी चला रहे हो, तो आपको टैक्सी तो कोई भी चला सकता है. राइट. और यहाँ पर पैसे, एक बात ये है कि सैलरी यहाँ सबको बराबर ही होती है. वो टैक्सी ड्राइवर भी इतने पैसे कमाता है, ऑलमोस्ट फार्मासिस्ट के बराबरी. यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसी को कोई बहुत ज्यादा मालदार नहीं है यहाँ पर, ना कोई गरीब है इतना. सबकी दाल रोटी यहाँ पर चल रही है. तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पर गवर्नमेंट का. Okay. So CAPS will be better or IELTS will be better? नहीं, आईएलटीएस तो मैंडेटरी है. आईएलटीएस तो इंग्लिश का टेस्ट है. Right. आईएलटीएस तो मैंडेटरी है, वेदर आपको कैप्स लिखना है या आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट पे आओ. Okay. हाँ, वो तो मैंडेटरी है, दोनों ही केस. इंग्लिश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो इंग्लिश का टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा. So for that also I have to give IELTS. आईएलटीएस, ओईटी, पीटी कोई भी दे सकते हो आप. And what about Duolingo? नहीं, डुओलिंगो कोई टेस्ट नहीं होता है, ऐसा अप्रूव्ड नहीं है कोई भी. Okay. Thank you. Thank you. यस, किसी को और कुछ? सूरज शाह, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड ऑन किया हुआ है. सर इस एग्जाम नहीं में सर, क्वेश्चन नहीं। कितने? क्या समी? सर क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 होते हैं? 2 घंटे का टाइम. अच्छा, और पासिंग मार्क्स 50% है? 50%. 50 सही कर दिए आप पास हो जाओगे आउट ऑफ 100. अच्छा. और सर ये असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाए तो हम एग्जाम का डेट कभी भी बुक कर सकते हैं या कोई फिक्स ड्यूरेशन है? यस, वंस योर असेसमेंट डन, फिर उसके बाद में उसी सिस्टम पर आपको वहां पर जाके क्लिक करना होगा, और जहां पर भी आपको अपना एग्जाम सेंटर चूज करके आपको वहां पर वो दिखाएगा कि ये डेट में अवेलेबल. फॉर एग्जांपल 20, 21, 22 फॉर एग्जांपल. फिर आपको चूज करना है कि 21 में देना है, आपको 22 में देना है या 23 में देना है.
और फिर आप वो करके बुक कर सकते हो। अच्छा और ये 4 दिन तक एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप किसी भी दिन, हाँ 4 दिन तक होता है, किसी भी दिन आप बुक करके एग्जाम दे सकते हो। सही है। कैसे कल को एग्जाम है कैप्स का, ठीक है। तो 20, 21, 22 और 23 ये 4 दिन एग्जाम है कैप्स का, ये नवंबर वाला। Sir, after skill assessment, is there any time limit for clearing the CAPS? No, there's no time limit. Skill assessment is for lifetime. Skill assessment में का मतलब क्या है? They just want to check your degree is not fake. क्या आपने डिग्री पास किया XYZ यूनिवर्सिटी से, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं इन दिस स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फॉर एग्जांपल दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, आप वहाँ पर फार्मेसी, ये 2 चीजें चेक करते हैं वो, यू नो, कि यस कि इज ए जेन्युइन कैंडिडेट, इसने पास किया इस यूनिवर्सिटी से, इसका रजिस्ट्रेशन ये है, और फिर वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, उसका कोई ऐसी वैलिडिटी नहीं होती है। यस, और आपने वंस यू पास द कैप्स एग्जाम, तो कैप्स एग्जाम की वैलिडिटी होती है फॉर 3 years। Sir, can we also attach our IELTS scorecard on skill assessment? No, there is no need. Yes, किसी कोई और क्वेश्चन है एट द एंड? सर ट्रांसक्रिप्ट मैंडेटरी है इसमें? यस, जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको एक चीज और बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। जो भी मार्कशीट, जैसे आपने बी फॉर्म किया फॉर एग्जांपल, तो बी फॉर्म में क्या होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, राइट। और उन 8 सेमेस्टर की मार्कशीट बना के यूनिवर्सिटी लास्ट में देती है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी को, और 2-3 दिन में वो दे देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसमें। ओके कहाँ से क्या समझा आपने? सर जोधपुर राजस्थान। जोधपुर तो आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी सर। मौलाना आजाद, अच्छा। कैसी यूनिवर्सिटी है वो? अच्छी है सर। अच्छी है। आज आपके वहां से बेसिकली एक रजिस्ट्रार के हमारे पास एक मैसेज आया हुआ था कि वहाँ पर एक वेबिनार के लिए, तो ये मेरे को नाम अभी आज ही आया था मॉर्निंग में। अच्छा वेबिनार करने वाले हैं हम लोग वहाँ पर। बढ़िया है सर। सर अगर बी फॉर्म प्लस एम फॉर्म दोनों है तो ट्रांसक्रिप्ट दोनों की चाहिए सर, बी फॉर्म और एम फॉर्म दोनों? हाँ दोनों की चाहिए, पर कोई फायदा नहीं है एम फॉर्म का लगा के, बी फॉर्म का लगा दो चुपचाप। 2 जगह लगाओ तो दोनों जगह चेक करेगा वो। जी, जैसे बी फॉर्म की मेरी 8 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उस पे सभी के नंबर्स मेंशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो चलेगी सर? हाँ वही चलेगी, उसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ओके सर। जिसमें सारे जो 8 सेमेस्टर के मिला के जो आपको फाइनल जो मार्कशीट मिलती है ना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट, या उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, वही वाली चाहिए। ओके सर, ओके, वो अवेलेबल है सर? वो तो वही चाहिए, वही डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके सर। एक फाइनल डिग्री? यस, वो मतलब फाइनल वो बताए थे ना कि आपने 8 सेमेस्टर में ये मार्क्स थे आपके, फर्स्ट सेमेस्टर में इतने, सेकंड में इतने, वो सारे बनाकर जो देते हैं लास्ट। जी, वो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट में हमारे लिखे हुए हैं सर, और एक फाइनल डिग्री भी है सर। हाँ तो वही चाहिए बस। जी ठीक है। यस गाइस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है फिर वी कैन फिनिश हियर, अदरवाइज प्लीज आस्क योर डाउट, एनी डाउट, एनीथिंग। जो लोग अभी रिसेंट ज्वाइन किए दे कैन आस्क देयर डाउट। सर यस, मरियम अरशद। Yes, sir. I have a question. Yes, please. Yes, Mariam. Sir, please guide us about scholarships regarding CAPS. वही तो मैं बोला, तो हमारी टीम से कनेक्ट करो आप, वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद वो आपको लिंक दे देंगे। Whenever you are ready, you just go and sit the exam. ठीक है, आप अपना फोन नंबर, ईमेल हमारा चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। तो आई हाईली रिकमेंडेड, प्लीज गो एटलीस्ट फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट को देख लो कि कैप्स में कैसे एग्जाम आता है, क्या होता है। ठीक है, वो फ्री है आपके लिए, कोई वो नहीं है, इवन हम आपको उसमें रिवार्ड दे रहे हैं, हम आपके लिए उसमें। ठीक है, तो उसको आप लोग अटेंड करें, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया खुद ही आया था स्कॉलरशिप पे, इसीलिए मैंने वो स्कॉलरशिप चालू किया था बहुत सारे बच्चों का हेल्प करने के लिए। तो आप लोग उस टेस्ट को मस्ट देखें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वेदर आप
किसी और पे जानना चाहते हो कोई बात नहीं, फ्री है ये। आप टेस्ट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करके 1 घंटा ऐसे बैठो जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, और देखो कि कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। ठीक है, जैसे गौरव, दिस इज आल्सो फॉर यू, So when the गो एंड सिट इन द एग्जाम। यस हर्षद, sir, when the scholarship test will be held? ये बेसिकली हमारे सिस्टम में बना हुआ है, वेन एवर यू वांट टू गिव यू कैन गिव। यस लिली। So I Sir, you I need to basically, connect with guidance the about this computer. LMS system. The question basically is based on your pharmacy degree only, you know. So whatever you study in your pharmacy degree, this कैप्स एग्जाम में वही हम लोग पूछते हैं। जो कैप्स का जो टेस्ट है हमारे पास में, हम उसी में से दिस इज काइंड ऑफ रियल क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में, उसी में से हमने बना के दे दिया है वो टेस्ट। ठीक है, और वो मीडियोकर टेस्ट है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप लोग उसको मस्ट आप उसको दें, एंड प्लीज गिव अस योर फोन नंबर, ईमेल, सो आवर टीम कैन Yes, कनेक्ट sir, टू we यू। have provided it, so consider them all. We have provided our WhatsApp number and email ID. वो अभी हमारी टीम कनेक्ट करेगी आपसे। आज वैसे भी Yeah. संडे, तो आज करेंगे शाम में, या वो कल मॉर्निंग में करेंगे आपको कांटेक्ट। Okay, thank you. Hello, sir. Yes. Sir, I want to ask that is there any chance that I will get directly call from a pharma company? Actually, I have got a mail from Canada, VN Pharma. So, is there any possibility, or is it a fake? इट इज मोस्ट लाइकली फेक। मैंने ऐसे 8-10 वीडियोस बनाए होंगे, मैं आपको दिखा दूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग उसका सब्सक्राइब भी कर लो। तो आपको मैं ऐसे फेक अलर्ट से आपको अलर्ट करता रहता हूँ। तो एक बच्चे ने बताया कि सर ऑस्ट्रेलिया में मेरी जॉब लग गई है, मेरे को सर 5 लाख रुपये महीना मिलेंगे और मैं आने वाला हूँ। मैं बोला भाई तूने एग्जाम पास किया? बोला नहीं सर, उसने भैया कॉन्टेक्ट किया। मैंने कहा उसने कहाँ कॉन्टेक्ट किया? तो उसने मेरे को जो है ईमेल आई थी मेरे पास में। Right. कि बेटा ये फेक है, ऐसा नहीं होता है इन जनरल। ठीक है, तो आई थिंक एक था, कौन सी कंट्री का था, मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो जो बच्चे मुझे जब रिपोर्ट करते हैं तो मैं उसको वीडियो बना देता हूँ कि ये फेक है या ओरिजिनल है ना। तो मोस्ट लाइकली वो फेक होगा। अगर ओरिजिनल है तो आप उनसे पूछिए कि आपको स्पॉन्सर करें वीजा के लिए, ना वो अगर फीस मांग रहा है आपसे, कुछ भी मांग रहा है तो वो फेक है। हाँ, नहीं अभी तक तो फीस कुछ नहीं, उन्होंने जस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है। अभी नहीं मांगेगा, वो लास्ट में जाकर अभी तक तो वो सब ही विल यू नो आपको ऐसा फील कराएगा कि ही इज नॉट ए एजेंट और समथिंग, यू नो, बोलेगा कुछ नहीं चाहिए आपसे, डॉक्यूमेंट भेजो, आप अपना पासपोर्ट भेजो, आप अपना ये भेजो वो भेजो, लास्ट में बोलेगा कि भाई वीजा के नहीं है, हम वी आर रेडी और आपके वीजा की फीस हमें चाहिए, वो है $200-300 या $500 बोलेगा। तो ऐसा करके आप सब बच्चों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप फांसते हैं बेसिकली वो। ओके, यस, तो मोस्ट लाइकली वो फेक ही होगा। और आप लोग अगर फार्मेसी प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल के लिए, चैनल के लिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम डालते रहते हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बनती थी यार बेसिकली ये सारे वीडियो मेरे ही आ रहा है। ये वाला मैंने किया था। सुकृत जो है इसकी, ये एक फार्मासिस्ट है, इसको जॉब मिल गई है अपने होम कंट्री से, ये थाईलैंड के फार्मासिस्ट है। आप लोग इसको सुन सकते हो या इसी पॉडकास्ट को। ओके, यूरोप में यार कौन सा कंट्री है? थाईलैंड, स्कॉटलैंड नहीं, ऐसे कोई कंट्री में याद नहीं पड़ा। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए थे, आप जाओगे मेरे चैनल पे, 2-3 महीने पहले बनाया था वो आपको मिल जाएगा। चलिए, कोई और क्वेश्चन है किसी का? यस पप्पू गुप्ता। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर पूछिए। आईएलटीएस एग्जाम पहले देना पड़ता है कि कैप्स का एग्जाम पहले देना पड़ता है? अच्छा, ये आपके अपने ऊपर है, आईएलटीएस का पहले दे लो या कैप्स का पहले दे लो। देयर इज नो गवर्नमेंट के हिसाब से की साइड से कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या लैब टेक्नीशियन है, उनके केस में उनको पहले देना पड़ता है इंग्लिश का टेस्ट और फिर बाद में उनका एग्जाम होता है। पर फार्मासिस्ट में ऐसा नहीं है। यू कैन राइट बिफोर कैप्स और यू आल्सो कैन राइट आफ्टर कैप्स, सो देयर इज नो रूल फॉर दिस। अच्छा, और सर उसका वैलिड कितना होता है? उसका वैलिड 2 होता है साल ना? का, 2 साल। और कैप्स का 3 साल? यस।
Okay, sir. Thank you. थैंक यू। चलो, आई थिंक ऑलमोस्ट डन, सो वी कैन फिनिश। सर। यस रुपेश। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। दिल्ली से रुपेश बोल रहा था सर, परसों भी बात की थी आपसे मैंने। अच्छा जी, बताइए रुपेश जी। जी जी सर, एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने इसलिए आज पूछा कि जो आइल्स और पीटी या ये देना, ये एकेडमिक देना होगा ना एग्जाम? यस यस, एकेडमिक वन। तो इंग्लिश का टेस्ट दो तरह का एकेडमिक होता है, एक होता है जनरल, एक होता है एकेडमिक वन। सो आप जो ठीक काम है। कर रहे हो वो एकेडमिक काम कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी एज ए हेल्थ ठीक केयर है। प्रैक्टिशनर, कोई भी मेडिकल डॉक्टर, हाँ सर। डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स। ओके, इस केस में आपको जो है हम्म। एकेडमिक वाला चूज करना होता है, आईएल्स एकेडमिक और पीटी एकेडमिक। तो जनरल वाला चूज मत ठीक है। करना, वो काम में नहीं आएगा, अदरवाइज आपको दोबारा देना पड़ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन था सर, कि जैसे डॉटर मेरी अभी मैक्स में इंटर्नशिप कर रही है, आपसे बात हुई थी ना परसों। हाँ हाँ हाँ। तो अभी उनकी प्लेसमेंट के लिए जैसे कॉलेजेस वाले प्लेसमेंट का वो चल रहा है पैटर्न, ठीक है ना? तो अगर कोई प्लेसमेंट मिल जाती है, कोई जॉब मिल जाती है, तो पैरेलल कर सकते हैं या फोकसली इसी पे ध्यान दें बेटर है? नहीं नहीं, चुपचाप तुम्हारी बेटी में जहाँ जॉब कर रही है उसको 10-12-15 हजार जो भी मिल जाए, किसी ठीक है। हॉस्पिटल में या किसी जी। फार्मेसी में जॉब कर ले, साथ में हाँ क्या हाँ। पास करे, वो उन जॉब पे ना जाए। तो बेसिकली जो भी कंपनी आती है कॉलेज के अंदर, वो क्या बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस या उस टाइप की जॉब हाँ आती है, हाँ बीपीओ टाइप हाँ। वाली जॉब। उसमें इनिशियली शायद तुमको लगा 20-25 हजार रुपये मिल रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे लड़की को जॉब हो गया, पर वो लॉन्ग टर्म में वो दिस इज नॉट वायबल बेसिकली, आप लॉन्ग टर्म अच्छा। सोचें कि कौन सा बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से आप हॉस्पिटल में जहां वो जॉब कर रही है ऑलरेडी मैक्स में वहीं मिल जाती है, तो वहीं पे कंटिन्यू कर लेंगे जॉब, ओके। और साथ में कैप्स को पास कर लें, ये उसमें ठीक ना है। जाए, उस चक्कर में ना फंसे। तो इफ अच्छा। एनीबडी इज हियर, एनी स्टूडेंट हियर, एंड इफ यू हम्म वांट टू लुकिंग टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री अब्रॉड में, अगर आपको जॉब करना है, तो हम्म। यू हैव टू वर्क इन रिटेल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी ओनली। Don't go अच्छा। in any industrial jobs, clinical research, medical writing, ओके। medical coding, medical affairs, regulatory affairs, या ऐसी बहुत हम्म। जॉब इंडिया के अंदर, इस सब में मत जाना। लॉन्ग टर्म में आप विदेश नहीं जा पाओगे। अगर आपको अच्छा। इंडिया में ही रहना है, हाँ। तो मन है कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही, मेरे को यहीं रहना है, उस केस में हम्म। पर आपको अगर आपको अगर आपको मालूम भी नहीं है अभी, इफ यू आर नॉट हम्म। श्योर सर मेरे को पता नहीं है मैं क्या करूंगा फ्यूचर में, तो हाँ अभी आप हाँ। हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में ठीक है। फार्मेसी में जॉब करो, और पैसे बढ़ जाते हैं 2-3 साल के बाद में उसमें भी, तो ठीक है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो आपने डिग्री लिया है अपनी फील्ड में जॉब करें, हम्म। फील आल्सो प्राउड कि जो आपने काम किया, जो आपने यूज हो रहा है उसकी आपकी डिग्री का। अदरवाइज जो आप काम कर रहे हो, आपने डिग्री किसी और में होती है और काम कुछ और ही कर रहे होते हैं बच्चे। हाँ, नहीं हमारा फोकस तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही है, इसीलिए नहीं आपसे बार मैं बार बात कर जनरल रहे हैं। सारे बच्चों को बता रहा था, जो जितने भी लोग यहाँ वर्क हाँ कर रहे ठीक है। हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर एक ये वीडियो मैंने बताया ना, ये है डेनमार्क का वीडियो। तो इस अच्छा। वीडियो में एक बच्चे ने बताया ना, फेक उसको जॉब मिल गई थी यहाँ पर, उसने हाँ कहा हाँ। जॉब लगी यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे ईमेल आते रहते हैं फेक जॉब्स के, तो ऐसे चक्करों में आप लोग ना पड़े। या यहाँ पर जो है ना कि देखो ये इसने ऑफर लेटर दिया था इस टाइप का बना के, ठीक है, यहाँ ओके। यहाँ पर इतनी आपको सैलरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, आपको ये करा दूंगा। ये सब फेक होता है। हम्म। विदाउट एग्जाम आपको जिस कंट्री में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अरे यार, हम ऐसे सोचो, सिंपली बात ऐसे सोचो आप, हमारा जो कंट्री है इंडिया, अगर किसी ने जी। एमबीबीएस रशिया से, चाइना से, फिलीपींस से, उसके बाद अगर हम्म। उसको प्रैक्टिस करनी है इंडिया में, तो उसको एग्जाम देना पड़ता है, कॉल एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करते हैं तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो सेम जी। फॉर यू, अगर आपको कहीं प्रैक्टिस करनी है किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि हमारा पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट, आपकी दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, इवन नेपाल तक में आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ जाएगी इफ यू वांट टू वर्क इन नेपाल एज ए फार्मासिस्ट। तो ये सब फेक होते हैं, ऐसा किसी को इसमें ना पड़े। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो डेफिनेटली इनिशियल में वो पैसे नहीं मांगेगा आपसे, वो लास्ट में मांगेगा बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग दिमाग थोड़ा सा सोच समझ के किसी को पैसे दें, कोई अगर एजेंट आपको ऐसा बता रहा है तो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर अगर हम जैसे जॉब इन अदर एरिया करते हैं लाइक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री या क्लिनिकल ट्रायल डिस्क्लोजर, तो दैट वोंट काउंट एज ए एक्सपीरियंस, नो उससे नो, बेटर हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, दैट वुड बी बेनिफिशियल राइट? देखो आप ये देखो, क्लिनिकल रिसर्च में इट इज नॉट
उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि फार्मेसी की नहीं जॉब है, वो उसमें कोई भी नर्सिंग किया हुआ, इवन बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, कोई बीएससी किया हुआ भी है, वो भी सेम जॉब कर सकता है जो आपको मिल रही है क्लिनिकल रिसर्च में, ठीक है। तो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फार्मासिस्ट रोल, फार्मासिस्ट का जॉब नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो कल को आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो, इवन इंडिया के अंदर ही, अगर आपको विदेश नहीं भी जाना है। तो इन जनरल विदेश में जो वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है वो होता है रिटेल फार्मेसी का या हॉस्पिटल फार्मेसी का ओनली। अच्छा। ये वाला एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा अगर आप ऐसा जॉब करते हो। फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल जाती है सीआरसी की, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर या हाँ जी। क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट, तो ये सारी जॉब्स जो है काउंट नहीं होंगी आपके एक्सपीरियंस के अंदर। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Aisha Siddiqui, do you have any question? Aisha, can you please unmute? Yes, sir. Good morning. Good morning. Sir, if I have a question, like if we are not able to pass the exam in the first attempt, so what will be the second option? Yes, तो अगर आप बेसिकली एग्जाम में होता है, मैंने को बताया था कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में जो है दे विल आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्लस फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी, ठीक है। So you have to score 50% in each component. So there are 2 paper, paper 1, paper 2. And if you fail in any of these 2 paper, for example आपने पेपर 1 पास कर लिया, पेपर 2 में आप फेल हो गए, या आपने पेपर 2 पास कर लिया, पेपर 1 में फेल हो गए, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम? तो नेक्स्ट टाइम आप जिस एग्जाम में आप फेल हुए थे वही पेपर आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोनों आपको रिपीट नहीं करने हैं। आयशा, समझ में आई बात? Yes, sir. I got it. Thank you. सर अगर फेल हो जाते हैं तो वापस फीस लगेगी? यस भाई, गवर्नमेंट के तो फ्री में गवर्नमेंट क्यों आपको टैक्स ले भाई? आप सिंपल से समझो कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, मगर टैक्स हो रहा है आपका दिल्ली में, तो जिस सेंटर पे आप टैक्स दे रहे हो वो तो उनसे गवर्नमेंट से सेम फीस चार्ज करेगा ना, वो तो फ्री में बैठा लेगा नहीं आपको भी ना गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इसलिए वो फीस तो चार्ज गवर्नमेंट हमेशा करती है। इवन इंडिया में हम जितनी बार भी फॉर्म फिल करते हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, तो भैया हम बार बार पे करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप फेल होते हो तो आपको अगर रिपीट किया आपने एग्जाम, तो आपको उनकी गवर्नमेंट वाली जो फीस है 2230 वो आपको पे करनी पड़ जाएगी। यस अमित यादव। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसमें कोई एज लिमिट है या और यस, ये क्या बहुत एक्सपीरियंस टेंशन कर रिक्वायर्ड? दिया आपने। यस, दिस इज गुड क्वेश्चन बेसिकली, कि कोई एज लिमिट है क्या इसमें? तो देयर इज 2 थिंग्स हैं इसमें। एग्जाम में बैठने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यू कैन राइट एग्जाम, अगर आप 50-60 साल के हो तभी एग्जाम लिख सकते हो आप। मगर जो वीजा होता है, वीजा जो मिलेगा आपको पीआर, उसमें आपकी एज होनी चाहिए बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 से कम होना मस्ट है, ठीक है। और जितने आप यंग होंगे इतने ही आपको ज्यादा चांस रहेंगे वीजा मिलने के। ओके, बट एक्चुअली सर मैं लेट ज्वाइन किया तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। ये किसी ने पूछा नहीं था एक्सपीरियंस आप, ये बेसिकली एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग क्या चाहिए अवेलेबल है सर? यूट्यूब पर, आप वहां जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पर यूट्यूब पर। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर फ्रेशर भी जा सकते हैं सर? हाँ भैया, मैंने बताया वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्रेशर भी जा सकते हैं। ओके सर। मतलब अगर आपने रिसेंटली किया है या आप अभी फाइनल ईयर में हो तो अभी आप आ सकते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सर ऐसा है ना कि सर अभी मेरी डिग्री मेरा फाइनल हो गया सर, अभी 2022 में, तो जी डिग्री अभी पेंडिंग हो गई, तो सर इसलिए मालूम कर रहा था सर। वो डिग्री तो मैंडेटरी है, डिग्री तो मिलेगी आपको, आपका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। सर ये वो है दोनों ना कि चीज़ mandatory है। प्रोविजनल डिग्री आ गई थी तो उससे डाल रखा है सर, वो मैंने हाँ, अभी तो अगर PCI में। प्रोविजनल से काम हो जाएगा, अगर आपको प्रोविजनल डिग्री मिल गई है और रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो अभी आपका काम हो जाएगा। जी 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 जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है भाई, और किसी कोई क्वेश्चन है? सर इसमें कोई सर मतलब डिग्री के रिलेटेड कोई परसेंटेज का वो मायने रखता है कि नहीं नहीं, नहीं कि नहीं इतना नहीं, परसेंटेज आना इवन चाहिए? नहीं नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि कोई परसेंटेज चाहिए डिग्री में, बी फॉर्म आपने किया या फार्मडी किया है, तो डिग्री का कोई मतलब नहीं है। वेदर आपके अगर 50% थे या आपके 90% थे आपके बी फॉर्म में या फार्मडी में,
तो अभी आपको सेम देना पड़ेगा, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है इनका। इवन इफ यू फेल इन सम एग्जाम इन योर बी फॉर्म या फॉर्म डी डिग्री में, और आपने बाद में उनको पास किया अपने सप्ली देकर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये और आपको प्लस टू जानी चाहिए बस, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री लेटेस्ट लेटेस्ट डिग्री चाहिए नहीं? यस, मतलब डिग्री चाहिए पास होने की बस। ठीक है सर जो इनिशियल स्टेज में जो 7 लाख का अप्रॉक्स लगता है, तो सर अरे एग्जाम भाई से पहले जो ये मैंने बताया अराउंड 2 लाख ये पूरे 1 साल में जो प्रोसेस है पूरा 8 महीने का, उस टाइम लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करो आप समझ नहीं रहे हो, फालतू क्वेश्चन के लिए चले जा रहे हो। मैंने जो बताया था 8 लाख 7 लाख रुपए लगेंगे, वो ऐसे नहीं लगेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप लगेंगे। तो पहला स्टेप होगा आपका स्किल असेसमेंट, उसमें जाएंगे करीब 70,000 रुपीज, 17,000। जब वो हो जाएगा फिर आप कोचिंग ज्वाइन उसके फीस पे करोगे। फिर जब आप एग्जाम बुक करोगे, जैसे मार्च में एग्जाम है तो आप फरवरी में या जनवरी में बुक करोगे, तो उस टाइम पे आप पे करोगे। और फिर जब आप इंग्लिश दोगे फिर उसकी पे करोगे। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप पे करना है, एक साथ में पे नहीं करनी होती है फीस पूरी। जो भी आप स्टेप करो उसी की फीस आप पे करोगे। प्लीज लीव योर फोन नंबर and email in the chat box so we can connect to you individually. Okay? तौसीफ, सम क्वेश्चन यूट्यूब पे है किसी का कुछ क्या? अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं बेसिकली यहाँ पर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है बेसिकली कि सैलरी ऑफ फार्मासिस्ट इज मोर देन नर्स। तो एमबीबीएस डॉक्टरों को छोड़ दें अगर ऑस्ट्रेलिया में, वेदर यू आर ए नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट, इन सब की सैलरी बराबर होती है यहाँ पर। मैंने बताया गवर्नमेंट ने यहाँ फिक्स की हुई है सैलरी, तो क्योंकि सबकी डिग्री 4 साल की होती है, ठीक है। तो सैलरी भी आपकी अराउंड बराबर ही है, और उसमें इनकी उसमें जो अराउंड 80,000 के आसपास पर ईयर आपको सैलरी मिलती है ऑन एन एवरेज इन सभी के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। Lot of pharmacists are getting an invitation. I can show you right now that the one question student asking that Rashida Tahir, the pharmacists are not getting the invitation, but this is not true. Lot of pharmacists are getting. Last week, Western Australia gave a lot of invitation for pharmacists. You can see here. Okay, so this is the latest information. And I can search here for pharmacist because मैंने यहाँ पर देख के रखा हुआ है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने वाला था, इसलिए मैंने ये बना के रखा था। तो देखो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को मिला है 65 पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने दिया था ये वीजा, ठीक है। और फिर अगला दिया है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट को मिला है, ओवरसीज बंदा है, इसको दिया 75 पे, ठीक है। और आप अगले पे चलो, रिटेल फार्मासिस्ट को मिला है 65 पे। तो ऐसे वीजा मिल रहा है, इन्विटेशन, ऐसी बात नहीं है कि वीजा नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो, आप इसको मिला है वीजा, इसको मिला है यहाँ पर वीजा, है ना। तो वीजा मिल रहा है। यस सर, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है? मतलब इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्री में काम करने वाला है, कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो कौन अच्छा रहेगा? रिटेल में फार्म जॉब करते हैं उनका डिमांड है यहाँ रिटेल फार्मासिस्ट, पे, रिटेल और हॉस्पिटल। यस, थैंक यू सर। 1 year एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस ऐसे मैंडेटरी नहीं है, पर आपको अगर इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन इट इज गुड फॉर यू। सो इफ यू हैव a 3 year वर्क एक्सपीरियंस यू विल गेट 5 points फॉर दिस, बट इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस तो फिर आपको वो 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये है। और कभी कभी कोई कोई स्टेट मांग देता है कि एटलीस्ट 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी इन दैट केस। तो फिर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो दिस इज गुड फॉर यू। और नेक्स्ट सर, हॉस्पिटल फार्मेसी में कितना साल का एक्सपीरियंस अच्छा आई रहेगा? एम रीडिंग द कमेंट फॉर यूट्यूब, और वहां से मैं आंसर कर रहा हूँ। सुरेश का एक क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल फार्मेसी जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, होल्डिंग एम फॉर्म डिग्री, 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसका प्रोसेस, पहले तो आप अपना पीआर अप्लाई करें, उसके बाद में यहाँ आए, फिर जॉब ढूंढें। घर बैठे जॉब नहीं मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ पर लोग आके जॉब ढूंढ रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर मैंने बताया जॉब कम होती है, मोर जॉब्स इन द रिटेल फार्मेसी और इन द हॉस्पिटल फार्मेसी। तो अगर आपको इंक्रीज करना है अपने चांस फॉर जॉब्स के, तो आप रिटेल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब देखें कैप्स के बाद में। यस, हेलो सर, कनव, recently completed my B Farm and 500
यस, आप आपने पास क्लियर किया तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा, not a problem. We will also guide you, personally I will guide you how you have to start looking a job in Australia, your CV, cover letter, what are the email, basically the website, all those things we will guide you. कॉप्स एग्जाम का जो कितने का फीस होता है वो होता है अराउंड 2230 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और 1.25 लाख इंडियन रुपीज में हो जाता है अराउंड द फीस। सॉरी सर, माय वाइफ एज इज 40 एंड शी इज एबल टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। यस, 40 पे भी है तो अभी माइग्रेशन कर सकते हैं। आई हैव 8 years of experience from इंडस्ट्री। यस, 8 year एक्सपीरियंस है, एक्चुअली यू कैन माइग्रेट। तो आप लोग बेसिकली, मैंने यहाँ पर अभी हमारा मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर अपना नंबर डाल देता हूँ, तो हमारी एकेडमिकली का, तो आप लोग वहाँ पर डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे लिए, तो वी कैन कनेक्ट यू देयर, और वैसे भी यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट अस करके हमारा ये है। चलो मैं आपको यहाँ से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, तो देन यू कैन वॉच दिस। यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। तो बेसिकली ये हमारा नंबर है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस व्हाट्सएप पर, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डायरेक्टली हमारे पास में आएगा आपका, और आप ईमेल भी कर सकते हो हमारे लिए। और यहाँ पर जो लोग सिडनी में हैं वो मेरे से मिल सकते हैं, यहाँ पर मैं ऑफिस में राइट नाउ मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको लाइव कर रहा हूँ, ये मैं अपने ऑफिस से ही कर रहा हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में आप जाओगे तो ये फॉर्म फिल कर दोगे, इमीडिएटली हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स, इसकी बेस पे आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये हमारे नंबर हैं व्हाट्सएप के, ये हमारा फ़ोन कर सकते हो डायरेक्टली इंडिया के अंदर, हमारी ये हमारा ईमेल है ऐसा, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई थिंक फॉर टुडे। आई थिंक ये 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है अभी, ठीक है। तो आसिफ फिर अभी कन्वर्ट कर देते हैं कि नहीं? ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड